मॉड्यूलर अरिथमेटिक में करना क्या है, वी सिंपली डिवाइड दीज टर्म्स. सो this is A, this is B. So 2 is dividing 21. I'm telling you quotient is of no use. So the answer, whatever be the remainder, it is A mod B, which is equals to remainder. So the value of 21 mod A2 becomes 1. Now beta, if it is given in the form of addition, you just firstly add it. So after adding it, 9 plus 23, it becomes 32, and then you just solve it with 12. So it is with 24 and remainder is 8. Whatever be the question, you don't need to use it. So our final answer is 8. Whatever be the remainder, you just write as modulo arithmetic. A mod B is equals to remainder. Now in case of multiplication, you just multiply it and then divide it. Yeah, this is simple kind of questions. Now the value of A is smaller than B. Then what we can do when 10 divides 3? बेटा this is a divisor, so हमेशा ये इससे divide करेगा. 6 divides this. आप छोटा बड़ा नहीं देखोगे कौन सा छोटा है, उसे उससे डिवाइड करेंगे. ये B है, यू ऑलवेज यूज दिस एज अ डिवाइजर. तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 3 फ्रॉम 10, सो यू जस्ट राइट 0 एंड वॉट एवर बी द वैल्यू दैट बिकम्स सेम एज रिमाइंडर. सो द रिमाइंडर बिकम्स 3. In this case, this is going to be totally divide. So the remainder is 0. What you are going to observe that remainder may be equals to 0 or greater than 0. In each case, the value of remainder is greater than 0, and in this case it is 0. Beta, what happened when the values are coming in negative form? So अभी तक हमने अरिथमेटिक में पढ़ा था पॉजिटिव वैल्यूज़ को, मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा था पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करना, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ नेगेटिव वैल्यूज़ आर ऑल्सो गोइंग टू बी डिवाइड. In this case, what we need to do, as -8 is not possible to divide 5. So बेटा अपने को 5 से डिवाइड करने के लिए -8 से छोटा नंबर नहीं लेंगे, हम बड़ा नंबर लेंगे. जब भी नेगेटिव यूज़ होगा, सो यू कैन टेक ग्रेटर वैल्यूज़. So 5 1s are 5, 5 2s are 10. Basically we can use this to divide 8, but if it is a case of minus, then you can use next term which is greater than 8, not less than 8. So we can basically use 10. So the quotient is -2. Again, quotient is of no use, still I am writing it. But what is going to be happen? Negative sign get changed as positive. Whatever be the sign written, you just change the sign. So -8 plus, then it becomes 2. So the remainder is 2. That means if the values are negative, still the remainder is positive, and it is mod of B. Means it is always less than B. You are going to see the remainder is less than B in each and every case. Here 2, B is 2, it is 1. Here B is 12, it is 8. So the remainder is always less than B, and B is in positive case. That means you need to take B positive only, not their negative values. Sometimes maybe this is going to be happened -5. So this case you also need to do in the same format. Now after modulo arithmetic, our next topic is congruency modulo. But what is going to be happened? Instead of writing A mod B equals to R, we can write it as A 3 lines B mod N. And congruency modulo says if I subtract A and B, that means A minus B, it is always divisible by N. This is congruency modulo. Instead of writing A mod B equals to R, this is going to be written as A 3 lines B mod N.
where the value of n is always greater than 1 and their subtraction is divisible by n. So a minus b is going to divisible by n. If a and b are two integers and they are greater than 1, then a is said to be congruent to b modulo n if n divides the difference of a and b. Now we just try to solve the questions, then you are easily able to understand the concept. Basically, we have three kind of questions in congruency modulo. Congruency modulo is a, then 3 lines, congruency lines, mod n. So maybe one time this is going to be missing, or this is going to be missing, or this is going to be missing. So three kind of questions are there. When a is missing, the question is this. You need to find the value of x. Maybe b is missing, the process is this. Or maybe n is also going to be missing. So you have three kind of questions in this topic, congruency modulo. The formula is a congruency b is mod n. And congruency modulo says a minus b is always divisible by n. So we are going to do the same process. That means x minus 12, this is a, this is b, and their subtraction is always divisible by 5. Here if it is divisible by 5, तो बेटा simple mean है, it is also multiple of 5. And something is a multiple of 5, तो आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, x minus 12 is equals to 5 lambda. बेटा जब भी अपने पास a minus b डिविजिबल होगा n से, तो you can write it like this, a minus b equals to n lambda. यही प्रोसेस हमने ये यहाँ करी, x minus 12 is equals to 5 lambda. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x becomes 5 lambda plus 12, where lambda is equals to integers. That means the value of lambda is minus 2, minus 1 and so on, or maybe 0, 1 and 2 and so on. So अपने को ये lambda की वैल्यू, that means ये वैल्यूज़ इस पॉइंट्स में पुट करनी है और you are getting the value of x. So basically अगर मैं x में lambda की जगह -2 पुट करूँगी, so it becomes 5 into -2 plus 12. So it is -10 plus 12, that means 2. You can take only 3-4 values. So the set of x becomes dot 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 -2 पुट करा यहाँ पे लैम्डा की जगह, you get 2. -1 पुट करा यहाँ लैम्डा की जगह, so you get 7. 0 पुट करा, you get 12. 1 put kara, you get 17, and after putting 2 it becomes 22 and so on. In the same format बेटा ये भी अपना ऐसे ही सॉल्व होगा, exactly same. So it becomes 39 minus x is divisible by 7. 39 minus x is a multiple of 7. सेम प्रोसेस आपको लिखनी है यहाँ पे भी. सो 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 लैम्डा. वहाँ पे हमने ये टर्म इधर मूव कराई थी, बट यहाँ x को इधर ले जाते हैं बिकॉज x इज इन नेगेटिव. सो इट बिकम्स 39 माइनस 7 लैम्डा इक्वल्स टू x. Then the same process where lambda is equals to integers. So lambda is equals to integers, that means dot 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 -2 -1 0 1 2, and then after putting the value here, the value of x becomes, अगर बेटा instead of lambda -2 put करेंगे, so it becomes 39 minus 7 into -2, so it is 39 plus 14. So x की value 53 again, so on you can put.
So the value of x becomes dot dot dot, instead of -2 it becomes 53, then instead of -1 it becomes 46, then instead of 0 it becomes 39, then for 1 it becomes 32, and so on. You can write 2 or 3 values only. So beta, this and this is totally same. A little bit difference you can see in this question. So basically first process is same. 147 minus 3 is divisible by m. First line is totally same. सेकेंड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, m इज डिवाइजर ऑफ, मल्टीपल वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे m इज डिवाइजर ऑफ 147 माइनस 3. दैट मीन्स m इज अ डिवाइजर ऑफ 144. ये छोटा सा स्टेप चेंज आ जाएगा बेटा. अब अपने को 144 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, किस किस टेबल में 144 आता है. सो द वैल्यू ऑफ m बिकम्स द सेम. सो 144 बेटा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में आता है, 12 के टेबल से 144 डिविजिबल है, देन 16 के टेबल से 18 के टेबल से 24, 36, 48, 72 एंड 144. बेटा अगर किसी को फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम है तो ये भी स्टेप देख लो. 144 2 के टेबल में आता है, ये अपना आंसर हो गया. 2 के टेबल में 144 आता है 72 पे. 3 के टेबल में 144 आता है 48 पे. 4 के टेबल में आता है 36 पे. 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 24 पे. 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 18, 9 के टेबल में 16 एंड देन इट कम्स इन द टेबल ऑफ 12. तो बेटा 12 के टेबल में 12 पे आता है. जहाँ भी 2 नंबर्स रिपीट हो जाएं आपको अपनी प्रोसेस रोक देनी है. तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 और ये रिवर्स फॉर्मेट में भी 16, 18, 24, 36, 48, 72 और वो खुद नंबर 144. दीज आर द फैक्टर्स. अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अगर यहाँ पे 144 की जगह 48 आता तो हम कैसे सॉल्व करते. 48 के फैक्टर्स निकालने अगर अपने को. सो 2 के टेबल में 48 आता है 24 पे, 3 के टेबल में 48 आता है 16 पे, 4 के टेबल पे 12 में, 6 के टेबल पे 8 पे, 8 के टेबल में 6 में. बेटा एक्चुअली ये दोनों ही रिपीट हो गए 6, 8, 8, 6. सो अपने को यहीं पे प्रोसेस रोक देनी है एंड दिस बिकम्स देयर फैक्टर 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 खुद. सो दीज आर देयर फैक्टर्स.